Hey there, welcome to Jito Youth Junction, where ambitions, ideas, and conversations meet. This is where we sit down with incredible leaders and change makers to uncover not just their journeys, but also the hidden stories, values, and insights that shaped who they are today. Join us as we dive deep, spark new ideas, and inspire the next generation to dream big and make an impact. Today we have with us three special guests. Shri Motilal Ji Oswal, who's the founder and chairman of Motilal Oswal Financial Services Limited, one of India's leading financial services firms. Sir is also the chairman of advisory committee of Jito. We also have with us Mr. Rajat Hardy. He's the chairman of Jito Youth Wing, and CA Nikunj Oswal, who's the chief secretary of Jito Youth Wing. Welcome all. Thank you so much, Uncle, Yeah, for good. giving us some time. Absolutely, my pleasure. So wonderful to have this conversation with you, Uncle. We'll start the conversation. I, being a CA myself, I am very curious to know that how do you dive from the traditional things that CA does to entrepreneurship, and what advice would you have for professionals, young professionals who are looking for unconventional paths? Yeah. So सबसे पहले जय जिनेंद्र एंड निकुंज मेरा फैमिली है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में थे राजस्थान में एक छोटा सा जगह है वहाँ पर किराना की दुकान थी मेरे फादर की और मैंने अपना ग्रेजुएशन वहीं से किया राजस्थान से ही ओके बट आफ्टर ग्रेजुएशन यू नो अभी क्या करें आगे या तो यू गो टू योर फादर शॉप और यू कैन आई थिंक डू समथिंग ऑन योर ओन सो मैंने सोचा कि चलो कुछ पढ़ाई करते हैं तो फैमिली में मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो चलो मारवाड़ी हैं मतलब हिंदी वगैरह अच्छी है इंग्लिश अच्छी है लिटिल बिट मैथमेटिक्स अच्छी है अकाउंट्स अच्छी है पेरेंट्स वगैरह से बिज़नेस के बारे में थोड़ा कुछ काफ़ी सीखे जब छोटे थे तब कोई हॉलीडे होता नहीं था या तो दुकान पे जाओ या मामा के यहाँ चले जाओ सो दैट्स द वे यू लर्न सो जब पढ़ाई करने की बात हुई तो मैंने बोला चलो एटलीस्ट किसी ने एडवाइस किया फैमिली में से CA कर लो आप एंड देन CA करने के लिए पूछा भाई कहाँ करते थे बोला कि बेस्ट प्लेस टू डू CA गो टू मुंबई मैंने राजस्थान में भी थोड़ा धक्के खाए CA करने के लिए बट कुछ मज़ा नहीं आया एक दो महीना वहाँ पर देखा कुछ CA फॉर्म्स वगैरह में पाली में है जोधपुर में बट आई थिंक किसी ने एडवाइस किया एक हमारे रिलेटिव्स ने कि जाए बॉम्बे जाइए आप CA करिए एंड देन वंस यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट यू गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ कोर्सली आई थिंक यू कैन द ट्रेडिशनल प्लेस इज you can do your own practice traditional practice tax or audit or maybe you can do consulting या अपना फैमिली बिजनेस में भी जाने का ऑप्शन है काफ़ी लोग फैमिली बिजनेस में भी जाते हैं थर्ड ऑप्शन भी एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग ऑन योर ओन सो मैंने कुछ CA प्रैक्टिस थोड़े दिन के लिए स्टार्ट की बट मज़ा नहीं आया फैमिली बिजनेस तो जैसे मैंने बताया मेरे ब्रदर भी कुछ अहमदाबाद वगैरह में कुछ साड़ीज़ वगैरह का बिजनेस करते थे और वहाँ से लगा कि यार अभी तो कुछ करना चाहिए एंड तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा IPO वगैरह का मार्केट अच्छा चल रहा था 1984-85 में तो वहाँ दिखता है यार ये स्टॉक मार्केट अलग चीज़ है और वैसे आप CA का बैलेंस शीट वगैरह आप समझते हो अकाउंट्स वगैरह का तो मैंने देखा चलो एटलीस्ट कंपनियों पढ़ते हैं क्या लगता है सो देन मैं फिर वापस छोटा मोटा स्टार्ट किया अपना मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट था ऑफकोर्स एंड वहाँ से मैंने कुछ फैमिलीज़ वो लोग मेरे ब्रदर वो लोग कुछ करते थे शेयर्स में तो उनसे कुछ सीखा फिर यहाँ मार्केट में आके सीखा धीरे धीरे स्टार्ट किया बिजनेस एंड देन ऑफकोर्स आई वाज वेरी लकी फैमिली सपोर्ट भी था लक भी था और नॉलेज भी था एंड देन आई थिंक धीरे धीरे ये शेयर बाज़ार की जो जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से 1986-87 में एंड देन आई थिंक it was good time I think I was in the right time at the right place 89-90 we saw big boom हर्षद मेहता बूम तो वहाँ से काफ़ी मार्केट में वॉल्यूम बढ़ा नॉर्मली स्कैम से लोगों को नुकसान होता है बट आई वाज द बेनिफिशियरी ऑफ द स्कैम सो वॉल्यूम बढ़ता है तो एज ए ब्रोकर यू मेड लॉट ऑफ मनी सो वी मेड मनी लर्न द बिजनेस एंड देन आई थिंक वहाँ से इट वॉज अ गुड टाइम What was the index back then, Uncle? So when we started, the index was about 500. Wow. Yeah. Almost the So आज start की of the तारीख में stock करीब market. आज की तारीख में 85,000 है 1979 में 100 था 86-87 में 500 था now it is 85,000. So, Uncle, while building your business, how did you stay innovative and simultaneously managing family responsibilities?
एंड ऑल्सो यहाँ पर एक हाथ में आपको बिजनेस, यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग, यू हैव अ फैमिली, यू नो, टू स्टार्ट, टू रन, टू सपोर्ट. सो हाउ आर यू एबल टू ब्रिज दिस एंड व्हाट इज द एडवाइस दैट देखिए फैमिली का, सी जॉइंट फैमिली में आई वाज वेरी लकी दैट आई वाज पार्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली. सो पूरा फैमिली का सपोर्ट रहता है पेरेंट्स का. जैसे मैं यहाँ सीए करता था, मेरी शादी कर दी गई थी. ओके सीए इंटर का एग्ज़ाम हुआ, शादी होगी, और मुझे पता भी नहीं कि एंगेजमेंट किसके साथ की, मुझे पता भी नहीं. समझा, गांव से फ़ोन आया कि तेरी सगाई होगी. मैं बोला कौन है भाई, कुछ बताओ से. हमको बोला नहीं, पापा ने सदाई मतलब उन्होंने सगाई कर लिए. मैं बोला ठीक है भाई. और फिर जब इंटर का एग्ज़ाम दिया तो भाई तुम्हारी शादी है, बोला आ जाओ भी 1 महीने बाद, ऐसा. सो बिकॉज फैमिली ही डिसाइड करती है अपने उस टाइम में. पेरेंट्स यूज्ड टू डिसाइड. फैमिली सब, मेरी वाइफ वहाँ थी, शादी के बाद भी 3-4 साल राजस्थान में रही. मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था और कुछ सेटल हो रहा था. सो फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है मेरी लाइफ में. मेरे ब्रदर्स ने बहुत सपोर्ट किया, वो बिज़नेस करते थे. मैं तो कमाना बहुत लेट स्टार्ट किया हूँ, मेरे पढ़ाई का खर्चा उन्होंने दिया. सो ये तो एक बात है. देन कमिंग बैक टू द मार्केट, मार्केट वॉज वेरी स्मॉल एज ए सेट. बहुत छोटा मार्केट था. बट हमने शुरू से सोचा था कि हम अलग से क्या करें. तो जब हमने स्टार्ट किया तो रामदेव अग्रवाल भी, हम लोग सेम ही हॉस्टल में थे, हम लोग मिले लेट, लेकिन वो इक्विटी रिसर्च करते थे. ओके और बैलेंस शीट तो ऐसे उधर चार्ट अकाउंटेंट करके समझना. तो रामदेव बोलते हैं यार इक्विटी रिसर्च करके, रिसर्च बेस्ड एडवाइस अपने करें तो ये डिफरेंशिएटर रहेगा. क्योंकि उस टाइम ब्रोकर्स वाले सब ट्रेडिशनल थे. तो मैं बोला ये बहुत अच्छा आइडिया है कि भी क्लाइंट्स को अगर वैल्यू ऐड करेंगे, राइट एडवाइस देंगे तो डेफिनेटली उनका पैसा बनाएंगे, तो अपने साथ बिजनेस भी बढ़ेगा. सो सिंपल थिंग, एटलीस्ट डू काइंड ऑफ आई थिंक रिसर्च एंड गिव द सिंसियर एडवाइस. सो हमने 2 ही चीज़ सोचा था कि रिसर्च एंड वैल्यूज़, कि भी एथिक्स, इंटीग्रिटी, बिकॉज ब्रोकर वॉज अ वेरी बैड वर्ड. Okay, there were a lot of kind of I think manipulations, and Harshad Mehta and lot of people came in. So उस टाइम में to create the transparency, trust, values, and then to give them the research was a big differentiator. और वो जो हमने जो रिसर्च का फॉर्मूला जो लगाया था, अभी भी आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ टुडे इज रिसर्च. And that research based advice has really helped us, and that's our differentiator with what we feel it. Right. So कुछ भी हटके करो और कुछ अलग करो, आई थिंक उसका एक अलग वैल्यू प्रोपोर्शन होता है. दैट्स वेयर द पीपल लव इट, योर कस्टमर लव इट, एंड दैट्स द वे यू ग्रो योर बिजनेस, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन. So uncle, what is the overall entrepreneurial landscape in India, and what is the advice that you would have for the youth of today's world? Rajat, India actually is a country of entrepreneurs, and हमारी कम्युनिटी में स्पेशली इन जीतो कम्युनिटी एंड जेर मारवाड़ी ज़्यादा है, गुजराती भी है काफ़ी. तो उसमें बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, नेचुरली वी आर वायर्ड टू थिंक, एक्ट, बिहेव लाइक एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ आई थिंक you can say the heritage we have got or from forefathers. So the issue is, मेरे दिमाग में एक ही आता है कि entrepreneurs come to certain level, and after that really I think either they become complacent or they don't know how to grow. Stagnant. Okay, because the world is changing very fast. ये जो वर्ड है वो बहुत kind of I think what we call it VUCA word. It's a volatile, uncertain, complex and ambiguous word. तो उसमें एंटरप्रेन्योर के लिए अनलेसली यू ब्रिंग सम काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, सम न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यू विल स्टैग्नेट. एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, देन द स्काई इज द लिमिट. Look at today's kind of I think large companies, the largest market cap company is Reliance, but how they evolve from a kind of I think trader background to a kind of I think manufacturers, then I think multiple products, and the telecom is a very different kind of I think model. So they kept evolving and they kept kind of I think learning new products. Or look at second largest company is TCS. That technology, the whole digital world is very different. Then maybe the banking, the HDFC banks, and there are a lot of large companies. They have evolved over a period of time by innovating, by bringing very different perspective. Recently we did a big capital raising for a company called Zepto. तुम्हारी उम्र से शायद कम है. What is your age? तुम्हारी एज क्या है? 29. 32. And Zepto, that आदित्य पलेचा जीतो के प्लेटफॉर्म में आया था, ही इज जस्ट 23-year-old guy. 3 साल पहले कंपनी स्टार्ट किया था. 23 साल का लड़का है, एंड हिज मार्केट वैल्यू इज $5 billion. 40 मतलब आप गिन लो 5 बिलियन मतलब कितना होगा, 40,000 crores वर्थ ऑफ मार्केट कैप.
So this is absolutely amazing, and that's power of entrepreneurship. The knowledge and knowledge, passion, aspiration and entrepreneurship. That's the combination you see. So बहुत ऐसा नहीं है कि Zepto is one. There are thousands of Swiggy देखो आप, Zomato देखो, या even TCS और traditional IT companies देखो. Even हमारी company is also, I call it, we are an IT company. जी 700 लोग हैं हमारे पास only who are absolutely IT people out of 13,000 people. And all our back office operations, all our trading applications, all our apps, everything is we use power of AI, artificial intelligence. We have got a lot of bots being done. So this whole business landscape has changed. Now how do you kind of, I think, keep updating yourself and upgrading yourself? You have to update and upgrade both. Only updation will not help you, but keep learning more. The power of knowledge and what I call it the learning mindset. Do you have a learning mindset? And that's the way the power of entrepreneurship can be unleashed. I see, when I look at my own perspective, I had coined one word that how an entrepreneur can succeed, because we analyzed hundreds of companies. So I put the framework that the companies with VGLP. If I have to look at, analyze what are the successful traits of the successful company, including little bit success of mine, then I find that companies with values, companies with the growth mindset, companies with learning mindset, and the companies where the people, huge amount of kind of, I think, importance is given to the people. So if you got these all four kind of factors into an entrepreneur company, then you see these are the companies which are going to really, I think, go from here. Last, the P part is very important. How do you kind of, I think, get the best talent? How do you retain them? How do you train them? How do we really, I think, motivate them? We are creating India's one of the largest training center for our own employees. Mumbai mein, Panvel mein, we taken 17-acre land. It will be only training center for our employees, because we feel that the training and the talent trained will be the biggest differentiator in today's world. वंडरफुल अंकल, ये तो हो गया आपके मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के बारे में, बिजनेस के बारे में. टेल अस योर जर्नी अबाउट जीतो. जैसे लेगेसी आपने मोतीलाल ओसवाल ग्रुप को बनाई है, व्हाट लेगेसी डू यू थिंक यू कैन लीव बैक इन जीतो, एंड what do you think that your vision is for the youth which can create a lifelong impact in their lives? See, मेरे लिए जीतो जस्ट ए कोइंसिडेंस था. मैं शुरू में मेंबर नहीं बना था, बट बाद में मेरे एक फ्रेंड राकेश मेहता, उन्होंने बोला कि चलो नमाना साहब के चलते हैं, जीतो का एक मीटिंग है, आप चलो. एंड देन आई जस्ट बिकेम ए नॉर्मल मेंबर, एंड देन सडनली वी फेस ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राइसिस इन जीतो. पीपल केम टू मेक ए मोतीलाल जी, व्हाई डोंट यू कम एंड बिकम द प्रेसिडेंट. सो अब अपने दोस्त लोग आए तो मैं बोला चलो ट्राई करते हैं, राइट. एंड दे मेड मी प्रेसिडेंट. ऑल्दो मैं न तो कोई चैप्टर में चेयरमैन रहा, न कोई पोस्ट थी मेरे पास. तो फर्स्ट टाइम द फर्स्ट पोस्ट वाज द बोर्ड मेंबर एंड द प्रेसिडेंटशिप. एंड देन वी काइंड ऑफ, आई थिंक, डिड लॉट ऑफ काइंड ऑफ एफर्ट्स. वी हैड आवर फर्स्ट कन्वेंशन इन पुणे वेयर वी प्रेजेंटेड अवर ग्रैंड विजन. Most of the projects जो आप अभी आप देख रहे हैं, 70-80% of the projects were conceived at that point of time. So again, I had a lot of support from the people, and I gave time. We had a fantastic kind of, I think, team. My chairman Balbira ji was there, General Secretary Rakesh Mehta was there. So we, as a team, I think we put in a lot of efforts to make sure that there is a right kind of vision, right kind of projects are being taken, right kind of people are brought to head the projects. And that's the way I think we put in some efforts. I was there for 1.5 term. They made me chairman also. So I was very lucky that at least I could play some role in Jito to make sure that we do something for the community. Because हमारी community के पास resources बहुत है. हमारी community काफ़ी विश्वास करती है when we giving it back to the society. Correct. Yes. So and in the first kind of, I think, vision itself, if you look at the first newsletter when it published, I kind of wrote an article called Learn, Earn and Return. 2009 या 2010 में आप जीतो का देखोगे newsletter which the president used to write. So I wrote that Jito is the platform where you can learn, earn and return. All three things. But this is the way we learn from each other. We get the best of the kind of speakers. We have a lot of write sessions where we learn.
then from using that knowledge and using that platform, we do आपस में business भी बहुत करते हैं आपस में भी, and then kind of the power of networking really works. And then return, in any case, most of the members they come here to make sure that they give it back to society. हर member कोई 2 लाख देता है, कोई 11 लाख देता है, कोई 1.5 करोड़ देता है, कोई hostel बनाता है. So we are also working towards creating a university. So the whole mission of Jito was really, I think, that first bring unity among the community. And हमारे जैनों में वैसे भी बहुत सारे kind of पंथ है या आप सेक्स बोलेंगे, तो उसको जीतो ने सबको एक जगह लाने की कोशिश की सक्सेसफुली, और फिर वहाँ से इतने सारे इनिशिएटिव्स निकले. एंड आई फील प्राउड एज ए जीतो मेंबर दैट जीतो इज डूइंग, आई थिंक, लॉट ऑफ राइट थिंग्स फॉर द कम्युनिटीज, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, and even kind of holistic growth. That's wonderful, Uncle. Uncle, on that note, how can young Jito members, having you as the chairman of the advisory board of Jito, come in at Motilal Oswal Financial Services or have a career shift? No, I think youth today, youth are very smart. When I was really, I think, doing CA, really the knowledge was the power of internet, the power of media, and the opportunities available are huge. So now a person has to decide what is her passion and what is his or her strength. If you combine your passion with your strengths, you will kind of, I think, excel anywhere. Don't listen to what I'm saying that the financial service is good, or you may say the technology is good, but people have to find where exactly what they love to do, and they have to build strength. And that's the way they can kind of do that. One more important point which I always keep telling my people and wherever meet, that have the learning mindset. जब तक आप सीखोगे नहीं, world is changing very fast and so many new opportunities are coming in here, and the challenges are there, and the businesses are also very, very competitive. So unless you learn, the regulations are changing, the technologies are changing, the customer preferences is changing, new products are coming in. So I think in this kind of fast evolving, changing world, unless we have the mindset to learn something, and learning means you have to also unlearn many times. What has worked for you in the past may not work today. So you have to unlearn, and then relearn. Learn and relearn. Keep evolving, and I would say the right thing will be that remain a lifetime student. You're not a student in your own school or college, but remain a lifetime student. Keep learning. Every day spend some time. Like I spend every day at least couple of hours in the morning in reading books. That has given me a lot of edge. अंकल, सबके कोई ना कोई रोल मॉडल होते हैं. हमारे लिए जैसे आप एक रोल मॉडल हो, तो अगर किसी को मोतीलाल ओसवाल बनना है तो उसको क्या करना चाहिए? एंड क्या मोतीलाल जी ओसवाल के रोल मॉडल आज वही है जो पहले हुआ करते थे? See, I don't have any role model, but kind of when I look at kind of role model in different things, like when you look at health, when you look at meditation, they are kind of different parts of your life. So everywhere I like to learn from the best, and the best learning place is the books or the people wherever you can connect with them. So I think learning and growth mindset, these are very, very important kind of factors for anybody to bring excellence in whatever you do. And the very important part is the values, the ethics. Today, people really, I think very few people are building the businesses on ethical ways. Ethics. Transparency, governance, how do you pay your taxes properly, 100%. Right. So that's the way kind of, I think, the market differentiate between the good companies and bad companies based on the character and competence of the management. And character is more important than competence. I'm not saying that it is more important. First character come and then the competence come. Right. Yeah. So अंकल, आज मोतीलाल ओसवाल एक ब्रांड है. मोतीलाल जी ओसवाल खुद एक अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल है. मोतीलाल जी ओसवाल की हॉबीज क्या है? What does he like to do in his free time? How does he spend time? As I said, I reading every day. See, for me, Monday and Sunday there is no difference. Same routine. Okay. So I read. I get up anywhere between 3:30 to 4:30 for last so many years. Okay. And sometimes I get up at 2 o'clock, but then I sleep at 5 o'clock back. So at least couple of hours I get for myself, where I read books, I read articles,
I do my meditation. I do my then walk or yoga, whatever way kind of I think based on the mood. Kabhi yoga, kabhi walk, but not a single day where I miss my workout unless kabhi 3 बजे 4 बजे को flight में सो गए. So out of maybe 360 days, out of 365 days, I'll do some workout. I'll do some reading, and that's the way. That's the passion. बाकी time में कुछ भी कोई TV में थोड़ा बहुत program देख लो, news देख लो, and then you kind of I think keep talking to your friends. Or you keep going for some short holidays, 3-4 बार 4 बार, and most of the holidays are with Jito members. Wonderful. Wonderful, uncle. That is how we get to bond with you, uncle. Uncle, do you think, like coming back to the stock market now, do you think stock market is the best way to make money? And you have seen the stock market from 500 to 85,000. So you have seen many ups and downs. आज का यूथ पेशेंस कम होता है, शॉर्टकट चाहिए होता है, हर चीज़ जल्दी करनी होती है. So how do you have the patience to handle all the ups and downs? And do you relate the ups and downs of the stock market with the ups and downs of the life in the real life that See, we have? I don't get impacted by the ups and downs in the market. Because life may always there will be downs. Okay, but I believe that in life as well as in the stock market, ups are permanent and downs are temporary. Right. Ups are permanent and downs are temporary. Because well, you see, ऐसा stock market ऐसे ऊपर नहीं गया है. Exactly. But वही volatility ups है. permanent. आप देखोगे आप 100 से अगर 85,000 हुआ है तो ups ही रहा है. So ups are permanent. But there will be corrections, there will be time down. Same thing in life. ऐसा नहीं है कि आपको career graph ऊपर ही जाना है. Everybody including me have seen lot of setbacks. So that is part of life. सवाल क्या है कि remain optimistic Right. and keep doing the right things, right values, right processes, working with right kind of people. That's the way. And stock market is a great place to make money. Okay, सबसे important uncle वही है ना. but it's When that also down comes in. it also a great place to lose money. Lose money. Right. Okay, That's and what- majority of the people lose money. Yeah. Right. The people who follow the discipline, people who have at least some strategic kind of planning of themselves, they will make money. But you can only make money over a longer period of time. Right. Like I buy stocks for next 10 years, 20 years. I don't buy and trade and every day, that kind of stuff. Same thing, the investors have made huge money, but traders or speculators have lost money. No. But there will be few smart traders also, they will make money, but maybe they have their strategy, discipline, or they are lucky, but it's very difficult to make money. So don't go into shortcuts, stock market or anywhere. There are no shortcuts in life. Have a disciplined approach. Absolutely. So now, uncle, the human approach is being somehow replaced with the algo trading and all the AI-based tools that we have in stock market. What do you see how do you foresee the future? Like, आपके टाइम पे जो रिसर्च था, वो आपने बैलेंस शीट्स पढ़ के R&D करके रिसर्च करके करा था, लेकिन आज we have tools that do all of these things in minutes. How do you foresee कि ये human intervention निकल जाएगा पूरा? Do we rely on the systems? See, computers will do lot of work what the people are doing today. Lot of work. But what they can't do is the emotion part. Okay. What they can't do the intellectual part. They say artificial intelligence, but they will do once you really I think put it into the algorithm, same thing they'll do it, keep it. So they will be far more efficient, but they can't kind of do what the human beings can do. So emotion part, intellectual part, the thinking part, innovation part, and the aspiration part. That's again emotional, but so there's something which human beings really are good at. If you can keep using your strengths and then use the kind of AI or technology, then you can actually extrapolate or you can bring huge growth. जब मैं start किया था business hardly 10-20 trade करते थे दिन में. Now we can do millions every day. We do 2-3 million transactions a day. Wow. So, but अभी भी हमारे पास 14,000 लोग हैं. So we need people and technology both. Yeah, in our business also. But yes, the routine kind of I think jobs will keep kind of I think being done by the systems. And I see huge amount of kind of the problems if you don't learn, if you do the routine like your maids, your nurses, your drivers, your cooks, those all the jobs ultimately, even the basic surgery, they will be taken over by the computers. Right. But then how do you really I think keep evolving yourself and keep becoming better and better and better? I think you will definitely flourish. Right, uncle. So we would want to know that side of Motilal ji Oswal, which is beyond accomplishments. You have accomplished your journey, you have accomplished your wealth.
What is it that the next phase lies in? वो क्या चीज है जो मोतीलाल जी को आज ड्राइव कर रही है? No, I try to keep balance between all three: learn, earn, and return. I spend a lot of time on the returning part also, and as really, I think we are creating some universities. We are already founder for 3 universities, but now we are creating with our Jito friends. We are creating one more university. So all 3 things are very important in life today. But I think what gives me satisfaction today is really when I spend my time and my resources on giving it back to the society. That's the kind of, I think, big priority for me today, because large amount of wealth we have kept it aside for our Society. foundation through charities, and now we have got a CEO, full-time CEO for the foundation. Wow. So I'm working with him and his team to make sure that how do we bring more impact on the masses' lives. Incredible, uncle. Last question is, we all are believers of Jainism and we all follow it. What Jain value do you look up to that you inculcate in business also? As I said, that Jainism was the धर्म जो हमारे घर में बहुत मानते थे. मेरी mother, she is a very religious person and she has taught us, and साधु महात्मा बहुत आते थे. So the values, when you look back, they made huge impact on my life. Jainism values, जैसे मैं आपको VGLP की बात की कि values कहाँ से आता है, कि principles कहाँ से आते हैं. That's really, I think, you learn from kind of your religion. सोर्स ही अपना या सोर्स वही है. मेरी सिस्टर साध्वी है, रियल सिस्टर साध्वी है, उसने दीक्षा ली हुई है. So Jainism has made huge impact, but unfortunate part today is more than 90 or 95% of the Jains, they actually are not following religion in right way. We become more ritualistic rather than kind of going and following the principles of Jainism. मेन प्रिंसिपल. सब रिचुअल में चले गए, मंदिर बना दो, दर्शन कर लो, बट व्हाट इज बिहाइंड दैट? दर्शन मीन्स मेडिटेशन. डू यू डू मेडिटेशन? वहाँ तो बहुत सारा सोच रहा होता है मंदिर में. सो हमारे जो प्रिंसिपल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. जैनिज्म एक्चुअली इज द, आई वुड से, ओनली रिलीजन विच हैज, एक्चुअली जैनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ विच ऑल्सो, बोलते हैं ना कि ये ऐसा धर्म है जहाँ पर ज्ञान और विज्ञान दोनों है. दोनों है. ज्ञान और विज्ञान दोनों है. कंदमूल है. खाने में कैसा डाइट होना चाहिए आपका, कैसे आपके विचार होने चाहिए, योर काइंड ऑफ, आई थिंक, ह्यूज कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड योर बॉडी. सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत फंडामेंटल है. बट समवेली आई थिंक वी आर गोइंग टू, सब ज़्यादा अभी शोर शराबा दिखावा हो गया, Right. विच इज़ वेरी वेरी काइंड ऑफ, आई थिंक, डिस्टर्बिंग टुडे. लुक एट द वे धर्म अभी कैसे हो रहा है. मंदिर बना लो, इतने सारे हजारों लोगों का खाना कर दो, ये यात्राएं कर लो, इतनी सारे ये जुलूस निकाल दो. बट व्हाट इज ए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दैट? सो बहुत, एंड देन वी आर डिवाइडेड अवरसेल्फ. मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि अंतरिक्ष करके अपना पार्श्वनाथ में तीर्थ है, वहाँ पर पहले आते हैं कुछ लोग भगवान की आंखों के साथ पूजा करते हैं, फिर भगवान की आंखें निकालते हैं, फिर पूजा करते हैं. अभी मैं शिखर जी गया था लास्ट वीक. मतलब इतना ग्रांड तीर्थ है हमारा, बट लुक एट हाउ इट इज बीइंग मैनेज्ड. आपस में लड़ रहे हैं, तो कोर्ट केस चल रहा है, एंड वहाँ पर इतनी, मतलब हमारे 21 या 22 कितने तीर्थंकर वहाँ पर कल्याणक हुए हैं, लेकिन ऊपर आप जाओगे ना, आई थिंक यू रियली फील that such a great places are really, I think, being really not being kind of taken care of. So I feel sad when I see the religion being practiced this way, but that's the way it is. So you guys have got a lot of responsibility to make sure that Jainism principles are taught in a right way and they are being practiced in right way. And that, I'm telling you, if you do it right way, I think you absolutely can get nirvana. There is no way. आप कितने मंदिर चले जाओ, कितनी यात्राएं कर लो, अगर आपके दिल में, अगर मान लो विश्वास नहीं है, अगर दिल आपका साफ नहीं है, अगर आप वैल्यू बेस्ड धंधा नहीं करते हो, आप कुछ भी करते हो. एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू गाइज कैन एटलीस्ट मेक श्योर दैट वी प्रैक्टिस द रिलीजन राइट वे, and I think we keep it alive, that religion. Otherwise we have a kind of, I think, a lot of challenges going from here. Definitely, uncle. So one last question, that is, as chairman of advisory board of Jito today, how do you see Jito evolving in the next 2 years?
or the future? नहीं, जीतो का फ्यूचर बहुत अच्छा है. आई थिंक जो भावना है ना, एक तो भाई आपस में मिल के रहें, जी. और दूसरा कुछ तो कुछ यहाँ पर सब लोग आते हैं तो कुछ तो कुछ अपना समय देते हैं, कोई अपना रिस्क, कोई तो अपना वेल्थ देता है, कोई समय देता है, कोई ज्ञान देता है, कोई गाइडेंस देता है. सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. एंड इफ़ यू कैन get the right kind of organization structure, one of the thing I strongly feel that our Jito office and the Jito team, our employees, the Jito secretary has to be very strong, because member तो क्या आराम गया रहा है, हर आदमी आता है 2 साल रहता है चला जाता है, but ultimately the institution has to not only survive and thrive, then you need to have very strong stable secretary. So we need to make sure that we have got a very strong secretariat, we have very strong SOP, we have fantastic kind of, I think, discipline, then nobody can stop it. Wonderful. And we are, I think, on the right path. I'm very, very optimistic, and I feel a lot of people are giving their lot of time and resources to make sure that Jito as an institution is able to do something for the community. Well, thank you so much, Uncle. It was a lovely time speaking to you. No, my I feel pleasure. Yeah. We are very fortunate enough that No, we no, have no, shot no, this absolutely. first podcast with you. Yeah, you're most welcome. Yeah.